topic is condition of collinearity. Condition of collinearity for two vectors. Condition of collinearity. Two vectors are said to be a collinear vector if the vectors are parallel. A collinear vector means vectors are parallel or they may be in a line. Then vectors are said to be a collinear. है ना, कोलिनियर पॉइंट के लिए हमारे पास डेफिनेशन थी वो एक ही लाइन में होना चाहिए, लेकिन वेक्टर के लिए कोई कंपलसरी नहीं है कि वो एक ही लाइन में होने चाहिए. फॉर एग्जांपल, if I am taking one vector a, this is vector a, and I am taking one another vector, suppose this is vector b. Done. So here these two vectors are not in a same line, है ना, they are in different line, but they are parallel to each other. So here we can write these two vectors are parallel vectors. Done. So these two parallel vectors are collinear vectors because they have the same direction. Magnitude may be changed. For example, this is vector A and the magnitude of this vector B is half of this vector A. So can we write like this? Vector A is half of the vector B. Vector A is equal to half of the vector B. Directions are equal and magnitude of this vector A is, or we can say half, double, twice of vector A. So magnitude of vector A is double than this vector A. So vector A equal to twice of vector B. ऐसा भी लिख सकते हैं. डन. सपोज ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये वेक्टर बी पैरेलल है लेकिन उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन है. वेक्टर ए से वेक्टर बी की जो मैग्नीट्यूड है वो कितनी है? हाफ है, ऑपोजिट डायरेक्शन में. तो ऐसा भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ वेक्टर बी. वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के डबल मैग्नीट्यूड से डबल है और ऑपोजिट डायरेक्शन में. डन. तो दिस टू वेक्टर्स आर अगेन पैरेलल. ऐसे भी हो सकता है, वेक्टर बी को मैं यहाँ पर ले लूँ एक ही लाइन में लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड उसका डबल है. So all these conditions are the condition of collinearity. Here vectors are said to be a collinear vector. So condition is if vector A equal to, we can write lambda of vector B, where lambda is constant, it can be positive or negative. So these two vectors are said to be a parallel vector if lambda is positive or negative value. Clear students? इसमें वेक्टर पैरेलल होने चाहिए. If two vectors are parallel vector, then given vectors are said to be a collinear vector. पैरेलल वेक्टर नहीं है तो collinear वेक्टर नहीं है. क्लियर? सो वेक्टर A इक्वल टू लैम्डा B लिखेंगे, ऐसा लिख पाएंगे. सो वी कैन से दैट गिवन टू वेक्टर्स आर collinear वेक्टर्स. एग्जांपल करेंगे एक्सरसाइज में तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. अभी आपको इसको नोट डाउन करके लिखना है. कंडीशन ऑफ द कोलिनियरिटी ऑफ द टू वेक्टर्स. दूसरी कंडीशन इसके लिए थी डायरेक्शन रेशियोज, है ना. अगर ये समझ में नहीं आए तो आपको दूसरी कंडीशन चेक करनी है. डायरेक्शन रेशियोज, इफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टू वेक्टर्स आर इन proportion. If direction ratios of two vectors are in proportional, then we can say that given vectors are collinear vectors. Done. Suppose vector A is there, whose components are a1i, a2j plus a3k, and vector B equal to b1i plus b2j plus b3k. So here direction ratios are a1, a2, a3, b1, b2 and b3. If these direction ratios are in proportional, that means a1 by b1, a2 by b2 and c3 by 3 equal to lambda. Direction ratios are in proportional, then we can say that given vectors are collinear vectors. Done. These are the two conditions by which you can say that given vectors are collinear vectors or not. इसको आप भी नोट डाउन करके लिखो, एग्जाम्पल में करेंगे, है ना, एक्सरसाइज में.
उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स. Vector joining two points in a space. Vector joining two points in a space. So let us now consider what is the vector joining two points in a space. First, we have to consider 2 points in a space. This is our three-dimensional space: x-axis, y-axis, and z-axis. Consider 2 points. Suppose this is point P and this is point Q. Coordinates of this point P are x1, y1, and z1, and coordinates of this point Q are x2, y2, and z2. These are the 2 points in a space, and this is our origin point O. Done? So the position vector of these 2 points P and Q are nothing but the vector OP. Vector OP is the position vector of this point P, and vector OQ. Vector OQ is the position vector of this point Q, OQ. Done? And join this PQ. So here one triangle is formed. So in triangle OPQ, in triangle OPQ, if we apply the law of vector addition, triangle law of vector addition, what we can say? We can say OP plus PQ equal to OQ. OP plus PQ equal to OQ. Can we write like this? Vector OP plus vector PQ equal to vector OQ. Triangle law of vector addition. Now OP plus PQ equal to vector OQ. So from this we can write vector PQ. Vector PQ is nothing but the vector OQ minus vector OP. So what is vector PQ? Vector PQ is nothing but the vector joining these 2 points PQ. देखो, what is vector PQ? This is nothing but the vector joining point P with Q. Vector joining P with Q is equal to OQ. What is OQ? OQ is the position vector of point Q minus OP. What is OP? It's a position vector of point P. So this is the formula. Vector joining 2 points P and Q is nothing but the vector joining position vector of Q minus position vector of P. Done? So here, what is the position vector of Q? Can you write position vector of Q? No, vector joining these 2 points P Q is nothing but the vector PQ, and that vector PQ is nothing but the position vector of Q. Position vector of Q को हम लिख सकते हैं कैसे? x2i plus y2j plus z2k minus position vector of P. Position vector P is nothing but the x1i plus y1j plus z1k. x1i plus y1j plus z1k. Done? So this is the position vector. So now we can write this position vector, or you can say vector joining these 2 points P and Q. Vector joining point P with Q is nothing but the, है ना, वेक्टर अलजेब्रा लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था. दैट इज नथिंग बट द x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 minus z1k. This is the position vector, or you can say vector joining these 2 points P and Q. इसको आपको ऐसे लिखना है x2 minus x1. देखो वेक्टर joining this point P to Q. इसका इनिशियल पॉइंट क्या है? इनिशियल पॉइंट इज P, टर्मिनल पॉइंट इज Q.
सो वेक्टर ज्वाइनिंग दिस पॉइंट P विथ Q इज नथिंग बट द x2 माइनस x1. क्या करना है? x2 माइनस डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, x2 माइनस x1 I प्लस y2 माइनस y1 j plus z2 minus z1 k. That is the vector joining point P with Q. Clear? Change करें. What is the vector joining point? Vector joining point Q to P. तो ऐसे होगा Q to P. Vector joining point Q to P. तो क्या होगा? It's x1 minus x2. x1 minus x2 I plus y2 minus y1 j plus z2 minus z1 k. ऐसे होगा. Clear? So this is how you can write the vector joining these given 2 points. Clear students? ओके अभी हम सिर्फ थियरी स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद सम्स करेंगे, है ना. सम्स एकदम सिंपल है, आपको पहले थियरी समझनी है, उसके बाद वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स आ गया, उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला स्टडी करते हैं. सेक्शन फॉर्मूला है ना, 10th स्टैंडर्ड में और 11th स्टैंडर्ड में दोनों में हमने सेक्शन फॉर्मूला स्टडी किया हुआ है. अभी हमें समझना है सेक्शन फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वेक्टर. सेक्शन फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वेक्टर. तो देखो क्या होता है. सेक्शन फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वेक्टर. तो पहले तो स्टडी करते हैं कि हमने हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला क्या थे, उसके बाद वेक्टर फॉर्म में देखते हैं. ठीक है, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं. तो 3 केस थे हमारे पास, इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन और तीसरा केस था वो मिड पॉइंट वाला. सो फर्स्ट इंटरनली डिवीजन. इंटरनली डिवाइड इफ गिवन पॉइंट R डिवाइड्स लाइन सेगमेंट PQ इंटरनली. तो ऐसे था हमारे पास line segment PQ and R divides line segment PQ from P internally in the ratio. Here given ratio is PR by RQ, है ना. ये रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, PR by RQ, ये फिक्स रेशियो हमारा. R divides line segment PQ from P in the ratio M ratio N. This is M and this is N. That is M by N, है ना. ये रेशियो हमारा फिक्स रहेगा. That is PR by RQ. कौन सा रेशियो है? PR upon RQ. PR upon RQ ratio. Done. So coordinates, we can write coordinates of this point R. Coordinates of point R are coordinates of point R. So what are the coordinates of point R? For that we require coordinates of this point P. Suppose point P are x1 y1, है ना. 3 डायमेंशन में होता है तो x1 y1 z1 लेंगे, लेकिन हमने स्टडी किया हुआ है 2 डायमेंशन में, x2 y2. So coordinates of this point are nothing but the mx2 plus nx1. ये था ना, mx2 plus nx1 upon m plus n. This is x coordinate and y coordinate. my2 plus ny1, my2 plus ny1 upon m plus n. Then this is the coordinates of point R. R is section point. Done. उसके बाद एक एक्सटर्नली डिवाइड करके भी केस था. एक्सटर्नली डिवाइड, है ना. एक्सटर्नली डिवाइड और एक्सटर्नली इंटरसेक्शन दोनों अलग केस होते हैं. ये एक्सटर्नली डिवीजन है. आपको लगेगा कि कोई पॉइंट एक्सटर्नली कैसे डिवाइड कर सकता है, तो ये एक्सटर्नली डिवाइड कर सकता है, एक्सटर्नली इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है. सो PQ and our now point R divides line segment PQ externally from point P, है ना. सो रेशियो इज PR by QR. ये रेशियो फिक्स रहेगा. कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है? PR by QR equal to M by N. So what is our PR? PR will be like this. यहाँ से लेके यहाँ तक का होगा डिस्टेंस, that is our M upon QR. QR is this distance N. So for this case
R divides line segment PQ from P externally. Done? So ratio is PR by QR. PR by QR fix ही रखना है आपको. M by N. So now we have to write the coordinates of this point R. तो उसके लिए हमारे फॉर्मूला था, है ना, ये प्लस की जगह ऊपर माइनस आएगा. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R, यहाँ पर फॉर्मूला था कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेक्शन पॉइंट R आर नथिंग बट दी M, इसको हम बोलेंगे x1 y1, this is our x2 y2, so it's a mx2 plus minus n x1 upon m minus n. So coordinates of point R are mx2 minus n x1 upon m minus n. Y coordinate के लिए my2 minus n y1 upon m minus n. This is the case of external division. Clear students? और थर्ड केस था क्या था, मिड पॉइंट वाला था. मिड पॉइंट के लिए क्या था, सो मिड पॉइंट के लिए आर था ना, वो इक्वल डिस्टेंस पर था. जो हमारा रेशियो है m रेशियो n वो 1:1 था, तो वो मिड पॉइंट हो जाता है. सो दिस इज आवर पॉइंट P Q and this is our R. R divides line segment PQ from P in the ratio of 1:1. So R is our midpoint. Done. So our PR is M and our QR is N. So both ratio is M/N. So PR by RQ is 1:1. So now R is known as midpoint. So coordinates of midpoint are this is our x1 y1 x2 y2. तो क्या होता है x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2. Put m and n equal to 1. So 1 plus 1 by 2, ये 1 1 हो गया. So this midpoint formula is nothing but the special case of this internally divide. Done? तो ये हमने स्टडी करके रखा हुआ है. Now we have to discuss this section formula in terms of vector. ये सब समझ में आ गया. अभी इसको हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है स्टूडेंट्स. सेक्शन फॉर्मूला में हमारे पास ये 3 फॉर्मूला थे, 3 केसेस थे. डन. तो इसको मैं लिखूं अभी वेक्टर फॉर्म में. चलो सो फर्स्ट केस इंटरनल डिवाइड का देखते हैं. चलो internally divide section formula in terms of vector. Now so consider 2 points P and Q because we require line segment PQ. So this is suppose point P and this one is point Q. So point P and Q end points of line segment, and this is our reference point O. So position vector of this point P with reference to our origin is suppose vector A, and position vector of this point Q with reference to our origin O is B. So 2 points P and Q are there whose position vectors are A and B. Done. Consider this line segment PQ. Now point R is there which divides this line segment PQ from P in the ratio of M/N. So now we have to require coordinates of R. Coordinates of R in terms of vector is nothing but the position vector of R. So let's say position vector of this point R, that is our we can say division point. So now its position vector is R. है ना, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं, यहाँ पर आप उसको पोजीशन वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा. सो पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस डिवीजन पॉइंट R इज नथिंग बट दी, क्या होगा बोलो, कोऑर्डिनेट्स लिखते थे उसकी जगह पर आपको R का पोजीशन वेक्टर लिखना है. सो दैट विल बी इक्वल टू m b प्लस n a अपॉन m प्लस n. आया समझ में? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. देखो m इंटू वेक्टर b प्लस n इंटू वेक्टर a, position vector of point P upon m plus n. So this is how we can find the position vector of this division point R.
क्लियर स्टूडेंट्स? ये फॉर्मूला आपका सेक्शन फॉर्मूला हो गया वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। भी आप इसको याद रखो, एग्जाम्पल करेंगे, थोड़ा वो डाउट आपका जो होगा वो क्लियर होगा। लेकिन अभी आपको इसको समझने के लिए ट्राई करना है मैं क्या लिख रहा हूँ। ये इंटरनली डिवीजन था। एक्सटर्नली डिवाइड देखे तो कैसे होगा, देखो एक्सटर्नली डिवाइड। सो एक्सटर्नली डिवाइड में डायग्राम कुछ ऐसा होगा। ये जो लाइन सेगमेंट पी क्यू था वो ऐसे आएगा, ये पॉइंट पी क्यू है ना, ये पॉइंट पी और ये क्यू, ये लाइन सेगमेंट है। वेक्टर के फॉर्म में करना है तो इसका हमें पोजीशन वेक्टर, एंड पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर चाहिए। तो ये जो पी है ना, यहाँ पर मैं रेफरेंस पॉइंट ओ ले लेता हूँ। तो ये जो पॉइंट पी है उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा वेक्टर ए। देखो यहाँ पर हमने ए लिया है। ये जो पॉइंट क्यू है, पॉइंट क्यू, पॉइंट क्यू, उसका पोजीशन वेक्टर हमने ले लिया वेक्टर बी। Done, vector B. So now this is our line segment PQ. Now we have to divide this one as a divide externally. External के लिए हमारा जो डिवीजन पॉइंट होगा, सेक्शन पॉइंट, वो ऐसे कुछ बाहर आएगा। तो यहाँ पर ले लेते हैं, ये R हो गया, पॉइंट R. So here R divides line segment PQ externally from P, ना PR अपॉन QR रेशियो होगा। So ये जो R पॉइंट है उसका हमें क्या निकालना है, वेक्टर फॉर्म में उसका पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो इसका पोजीशन वेक्टर होगा सपोज स्मॉल r। तो वो क्या होगा, सो हियर पी आर अपॉन आर क्यू। सो पी आर, ये डिस्टेंस, दिस इज अवर एम, है ना। सेक्शन रेशियो तो हमारा कांस्टेंट है, कौन सा, पी आर अपॉन आर क्यू अपॉन एम बाई एन। सो दिस इज अवर पी आर, दिस इज एम अपॉन आर क्यू, और वी कैन से क्यू आर, क्यू आर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू आर, दिस इज एन। डन। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, देखो क्या होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, आर इक्वल टू, एक्सटर्नल डिवाइड के लिए माइनस एन आएगी। सो इट्स एम ए बार, है ना, ये पी आर अपॉन आर क्यू है, तो एम बी बार माइनस एन ए बार होगा। देखो एम एम बी बार, ये दोनों पॉइंट है ना, सो एम बी बार इन माइनस एन ए बार, माइनस एन ए बार अपॉन एम माइनस एन। ये फॉर्मूला को कंपेयर कराओ पिछले वाले एग्जाम फॉर्मूला के साथ, तो दिमाग में बैठ जाएगा, एम बी बार माइनस एन ए बार अपॉन एम माइनस एन। डन। जो जो फॉर्मूला यहाँ पर था उसमें सिर्फ माइनस एन आएगी। डन। सो दिस इज द केस ऑफ एक्सटर्नली डिवाइड। उसके बाद मिड पॉइंट में क्या होगा, देखो मिड पॉइंट आप समझ पाएंगे ना, ये दोनों केस समझ में आ जाएगा। सो मिड पॉइंट, मिड पॉइंट के लिए देखो लाइन सेगमेंट पी क्यू, तो ये लाइन सेगमेंट पी क्यू, ये हमारा पॉइंट पी, ये पॉइंट क्यू, दोनों का पोजीशन वेक्टर चाहिए, पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर होगा वेक्टर ए, देखो यहाँ पर वेक्टर ए ही है। पॉइंट क्यू का पोजीशन वेक्टर बी, यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी सेम सेम डायग्राम, पॉइंट क्यू का पोजीशन वेक्टर बी। नाउ मिड पॉइंट है, सो आर विल लाइज एट द मिड पॉइंट ऑफ दिस पी एंड क्यू। तो हमें क्या करना है, आर का पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो आर का पोजीशन वेक्टर निकालना है तो उसको हम बोल देंगे वेक्टर आर। डन। व्हाट इज द रेशियो पी आर बाई पी क्यू, पी आर बाई आर क्यू, m रेशियो n, that is in the terms of 1:1। डन। तो क्या होगा, देखो m b बार, सो 1 इंटू बी बार और m इंटू वेक्टर b प्लस n इंटू वेक्टर a, सो इट्स 1 इंटू वेक्टर a। तो क्या हो गया, वेक्टर b प्लस वेक्टर a अपॉन 1 प्लस 1, फॉर्मूला आ गया वेक्टर b प्लस वेक्टर a अपॉन m प्लस n, 1 1, सो 2। मिड पॉइंट का आ गया फॉर्मूला, vector r equal to vector b plus vector a by 2, that is vector a plus vector b by 2। Done। So these are the section formula of, so exercise 10.2, first question,
compute the magnitude of the following vectors. Magnitude निकालना है. देखो simple, 3 vectors are there. Question is find the magnitude. हमने स्टडी किया था. सपोज वेक्टर A is there, xi plus yz plus zk is there. So what is the magnitude of this vector? Magnitude of this vector is nothing but the square root of sum of square of its scalar components. For this vector A, x, y and z are known as scalar components. है ना, मैं आपको फॉर्मूला लिख रहा हूँ. So vector A का magnitude क्या होगा? It's a square root of sum of square of scalar components. Scalar components are x, y and z. So it's a x square plus y square plus z square. बस इतना ही करना है. So here first given vector A is suppose vector I cap plus j cap plus k cap. So which are the scalar components? 1, 1 and 1. So what is the magnitude? Magnitude of vector A is nothing but the square root of scalar component का square का addition करना है. So it's a 1 square plus 1 square equal to root 3. Clear? दूसरा vector B. For vector B, we are given 2i minus 7j minus 3k. So magnitude of this vector B is nothing but the square root of 2 square plus minus 7 square plus minus 3 square. क्या होगा? 4, 14. So it's a square root of 4 plus 49 plus 16, which is nothing but the 62. This is the magnitude of given vector B. Done. Third vector C is given. Vector C is 1 upon root 3i plus 1 upon root 3j plus 1 upon root 3k. So here if you have to find the magnitude of this vector C, so magnitude of vector C is given as square root of sum of square of its scalar components. So 1 by root 3 square plus 1 upon root 3 square plus 1 upon root 3 square. So it's a 1 by 3 plus 1 by 3 plus 1 by 3. So this is equal to root 1. So our magnitude is 1. Done. So here what is the magnitude? Magnitude of any vector is nothing but the sum of square of, or you can say square root of sum of square of its scalar components. Done. So this is how you can find the magnitude of any given vector. So now question number 2. Second question. Here write two different vectors having the same magnitude. Write two different vectors having the same magnitude. So vectors may be different, but their magnitude must be equal. So let's say vector A. Vector A is 2i plus 3j plus 4k. This is one vector. And let's another vector B. Vector B is what I am doing. I am just changing the scalar component of this vector. So स्केलर कंपोनेंट अलॉन्ग विद द जेड एक्सिस उसको मैं चेंज करके एक्स एक्सिस के साथ लिख दूं. सो इट्स अ 4i प्लस 2j plus 3k. Scalar components are same but interchanging the scalar component with the axis. So these two vectors are there. These two vectors are different vectors, but if we consider magnitude, so magnitude of these both vectors will be same. So here magnitude is 2 square plus 3 square plus 4 square. So this is equal to square root of 4 plus 9 plus 16 equal to square root of 29. Similarly, magnitude of vector B is, it's a square root of again 4 square plus 2 square plus 3 square. So this is equal to 16 plus 4 plus 9, and that is equal to 29. So two vectors are different vectors, but their magnitudes are equal. Done. So this is how you can write any two vectors whose magnitudes are equal.
but directions are different. Two vectors having the same magnitude but different directions. Now question number 3. Now we write two different vectors having the same direction. We have to write two different vectors having the same direction. Direction must be same, but vectors may be different. So let's say one vector A, suppose vector A is I plus j plus k. This is one vector. Done. And another vector B is there. Suppose this is equal to phi I plus phi j plus phi k. So what about these two vectors? Magnitude of this vector A is nothing but the root 3, and magnitude of this vector B is nothing but the 25 plus 25 plus 25. It's a root 75, which is nothing but the 25 threes are, so it's a 5 root 3. So these two vectors are different vectors, but they are having the same direction. These two vectors having the same direction. Done. Because here we can say magnitude of vector A is equal to 5 times of magnitude of vector B. So these two vectors are parallel vectors. Right? These two vectors are collinear vectors, we can say. Collinear vectors are parallel vectors and their directions are same. Because direction ratios, here direction ratios are, what is the ratio of the direction ratio? It's a 1 by 5, 1 by 5, 1 by 5. Direction ratios are in proportional, or we can write mod A is equal to 5 of magnitude of vector B. So these two vectors are in same direction. These two vectors are in same direction. Done. So this is how you can solve your question number 3. Rosiraj. Fourth, find the values of x and y so that the vectors 2i plus 3j and xi plus yj are equal. So two vectors are there. Let given first vector is vector A, which is equal to 2i plus 3j, and another vector is vector B, which is xi plus yj. These are the two vectors. Bolo. Okay, chalo. Here two vectors are equal. Given two vectors are equal. So here vector A equal to vector B. So what is the meaning of this equality? Two vectors are equal when their direction ratios are equal. So direction ratios are equal. We can write x equal to 2. Now scalar components are the direction ratios. So we can compare x equal to 2 and y equal to 3. So y equal to 3. Done. So scalar components are equal if two vectors are equal. What is the important point? If two vectors are equal, or you can say if scalar components are equal, two vectors are equal. So two vectors are equal. We are writing double implies. That means if two vectors are equal, their scalar components are equal. And if scalar components are equal, then we can say two vectors are equal. Double implies. Done. So you have to remember this note. For the equality of vectors, their scalar components are equal. Done. So here scalar component is x and y. And here scalar components are 2 and 3. So corresponding scalar components in x direction, x equal to 2, y direction, y equal to 3 are equal. Next one, question number 5. Find the scalar and vector components of the vector with initial point 21 and terminal point is minus 57. We have to find the scalar and vector components of the vector whose initial point. So let initial point be the point P whose coordinates are 2 1, and terminal point, let's
assume terminal point be the Q and whose coordinates are minus 5, 7. Done. So these 2 points are there. So find the vector joining this initial point to terminal point. So we have to write vector PQ. So what is vector PQ? Is the position vector of Q minus position vector of V. Done. कैसे लिख सकते हैं इसको? It's nothing but the position vector of Q minus position vector of point P. So position vector of Q minus 5. So it's a minus 5 minus 2I plus 7 minus 1J. So vector PQ is nothing but the minus 7I plus 6J. Minus 7I plus 6J. Now here you have to write the scalar component and vector component. So first we'll write the scalar components. बोलो scalar components क्या होंगे? Scalar components are nothing but these are minus 7 and 6, and vector components are magnitude with direction, so it's a minus 7I and 6J. These are the vector components. So this is how you can write scalar component and vector components. Done. और वेक्टर पी क्यू कैसे लिखना है? वेक्टर पी क्यू ऐसे लिखना है, पी क्यू है तो क्यू के पोजीशन वेक्टर में से पी के पोजीशन वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना है ना? ये थियरी में हमने डिस्कस किया था. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. Here find the sum of the vector A and vector B and vector C. So three vectors are given. So vector A, given vector A is I cap minus 2 J cap plus K cap. Vector B is minus 2I 4J plus 5K. And vector C, which is I cap minus 6J cap minus 7K cap. Three vectors are given. Here we have to perform the addition of these three vectors. So addition of these three vectors, simple, very simple. It's a vector A plus vector B plus vector C. तीनों vector का addition. So this is equal to vector A I minus 2J plus K plus vector B minus 2I plus 4J plus 5K plus I minus 6J minus 7K, and hence this is equal to, what is the algebra of vector? You have to consider addition of these I components. First we will consider addition of this I component. 1 minus 2 plus 1. 1 minus 2 plus 1. So it's a 0I. Plus addition of this J component. Minus 2 plus 4 minus 6. So minus 8 plus 4. So it's a minus 4. So it's a minus 4J. Plus addition of this K component. 1K plus 5K. 6K minus 7K. So it's a minus 2K. So it's a minus 2K cap. So x component is 0. So addition of this vector is nothing but the 4J cap minus 2K cap is the addition of these given three vectors. This is the answer. Clear, students? Very good. Question number 7. Find the unit vector in the direction of the vector. Here you have to find the unit vector in the direction of the vector A. Vector A is I plus
j plus k, I plus j plus k. So to find the unit vector in the direction of vector A, we have to find a cap. A cap is nothing but the vector A divided by magnitude of vector A. So here we require to find the value of this magnitude of vector A. So magnitude of vector A is nothing but the square root of 1 square plus 1 square plus 1 square. So magnitude of vector A is nothing but the 1 plus 1 plus 1. So it's a root 3. So now we can write the unit vector in the direction of vector A, that is A cap equal to I cap j cap plus k cap upon magnitude of this vector, which is root 3. So our answer is अच्छा 2k है. So 2k 2 square 4 plus 6, this will be 6. So this will be root 6. Very good. Chalo. So it's a 1 upon root 6. 1 upon root 6 I plus 1 upon root 6 j plus 1 upon root 6 k. This is the unit vector in the direction of vector A. Done. Now next, that is question number 8. Sejal, find the unit vector in the direction of the vector PQ. Unit vector in the direction of vector PQ, whose P and Q are the points. Initial point P is given, which is 1, 2, 3. Terminal point Q is given, which is 4, 5, 6. So first we have to write the vectors joining these 2 points P and Q, and then we have to write the unit vector in the direction of this vector PQ. So let vector PQ joining these 2 points P and Q is nothing but the position vector of point Q minus position vector of point P. So we can write vector PQ as a 4 minus 1 I plus 5 minus 2 j plus 6 minus 3 k. So vector PQ 4 minus 1, it's a 3i plus 5 minus 2, it's a 3j plus 6 minus 3, it's a 3k. This is vector. Now we have to find the unit vector in the direction of this vector. So for that we require magnitude of this vector. So finding magnitude of this vector PQ, that is equal to square root of 9 plus 9 plus 9 equal to 27, and that is equal to 3 9s are 27, 3 root 3 is the magnitude. So now we can write the answer, that is unit vector in the direction of vector PQ. Unit vector in the direction of vector PQ is nothing but the vector PQ divided by magnitude of this vector PQ. So what is our vector PQ? Which is 3i plus 3j plus 3k divided by magnitude 3 root 3. So writing this 3 root 3 in the division of this scalar component. So it's a 1 upon root 3i plus 1 upon root 3j plus 1 upon root 3k. I, j, k. Done. So this is the unit vector in the direction of vector PQ. आपको ऐसे फाइनल आंसर लिखना है. क्लियर स्टूडेंट्स? ये समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 9. For the given vectors a and b, find the unit vector in the direction of vector a plus b. So given vector a is 2i minus j plus 2k, and vector b equal to minus I plus j minus k.
So find the unit vector in the direction of the vector a plus b. So addition of two vector is nothing but the one vector. So first we will find the sum of these two vectors a and b. So it's a 2i minus j plus 2k plus minus I plus j minus k. This is equal to sum of these two vectors is nothing but the sum of their scalar components. So it's a 2 minus 1 I, 2 minus 1, 2 minus 1 I. No, this is 2 minus 1 I plus minus 1 plus 1 j plus 2 minus 1 k. So vector A plus B is nothing but the I, ये 0 हो गया, plus k, this is 1k, I plus k, this is one vector. We have to find the unit vector in the direction of this vector, and for that we require magnitude of this vector. So magnitude of this vector is vector A plus vector B. क्या होगा, स्क्वायर रूट में स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर करके एडिशन. So 1 square plus 1 square is equal to root 2. So now our answer, unit vector in the direction of this given vector is vector A plus vector B. किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो. So it's a mode of vector A plus vector B. This is equal to I plus k upon root 2. So this is nothing but the 1 upon root 2 I plus 1 upon root 2 k. This is the unit vector in the direction of the sum of these given two vectors. Done. Unit vector in the direction of this, in the direction of the sum of the given two vectors. Done. Now question number 10. What is given in 10th question? Find the vector in the direction of the vector. So we have to find one vector in the direction of this given vector. Let given vector is phi I minus j cap plus 2k. Cap बोलो no, नहीं बोलो सब चलेगा. So we have to find one vector in the direction of this vector. Find the vector in the direction of this vector which has magnitude 8 unit. और इसके डायरेक्शन में वेक्टर फाइंड करना है और उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 8 यूनिट होना चाहिए. सो लेट्स फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस गिवन वेक्टर. सो यूनिट वेक्टर in the direction of वेक्टर ए वो निकालेंगे और उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो मल्टीप्लाई बाय 8, सो वी आर गेटिंग द रिक्वायर्ड वेक्टर. So unit vector in the direction of vector A, we require magnitude of this vector A. So magnitude of this vector A is nothing but the square root of 25 plus 1 plus 4. कितना होगा 30, square root of 30. So now unit vector in the direction of this given vector, it is A bar upon magnitude of vector. So it's a phi I minus j cap plus 2k cap upon root 30. ये तो यूनिट वेक्टर है, हमें चाहिए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर विथ 8 मैग्नीट्यूड. सो नाउ वी कैन राइट लाइक दिस. वेक्टर in the direction of vector A having magnitude 8 unit, having magnitude of 8 unit, that is A into A cap. 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. दिस इज अवर यूनिट वेक्टर डायरेक्शन कंफर्म हो गई. नाउ वी रिक्वायर मैग्नीट्यूड विच इज 8. सो मल्टीप्लाई दिस वन एज 8. So it's 8 into this one. This one is phi I minus j plus 2k upon root 30. This is equal to 40i minus 8 by root 30 j plus 16 upon root 30 k. Done. This is the required vector.